राम, जय श्री राम। और सब बताइए। राधे 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 राधे। मुकेश कुमार, हेलो मैडम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से हैं? आपका वेलकम हमारे लाइव में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बताइए क्या हालचाल है? हमारा हालचाल ठीक है। आप कहाँ से हैं? लाइक कर दीजिएगा स्क्रीन पे डबल टाइप करके। छोटू जी, हेलो हाय वेलकम। कैसे हैं? कहाँ से हैं? चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। आप कहाँ से हैं? गेट लगा दीजिए। चलो नहीं कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप तो आप तो बताएं कहाँ से? मैं झारखंड से हूँ। लाइक कर दिया। ओके थैंक यू। ये आता हूँ। ओके आइए आइए, आपका वेलकम है। जैसे सॉरी मुकेश कुमार, आपने आना। अच्छा आप हरियाणा से हैं। अच्छा हाँ, हरियाणा से बोल रही थी मैं। भूल गई थी। तो लाइक कीजिएगा। हेलो हाय वेलकम। प्रणाम माँ। हाँ माँ, खुश रहिए। कहाँ से हैं? आपका वेलकम। हेलो गगन जी, कहाँ से हैं? आपका वेलकम हमारे लाइव पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। झारखंड में रांची से हो क्या? नहीं, झारखंड में रांची से नहीं है, धनबाद से हैं। अर्जुन जी, हेलो हाय वेलकम। कैसे हैं? कहाँ से हैं? चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अर्जुन जी कहाँ से हैं? वेलकम है आप। क्या माँ? आप हो कहाँ से? पहले ये तो बताओ। हाँ गगन जी, बोलिए कहाँ से हैं आप? मैं आपकी माँ की जैसे शायद लगती होगी। चलिए अच्छी बात है। आपको मेरे में माँ की छवि तो दिखी। चलिए अच्छी बात है। और बताइए कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? लंच हो गया, मतलब सॉरी खाना पीना हो गया रात का? मुकेश कुमार, तो आपका
posted a record net profit of over 80,000 crore for the full financial year. But yes, there are a few concerns which remain for the market. And first and foremost, for allaying all those concerns, we have with us Mr. C.S. Sethi, Chairman, State Bank of India. So as we were discussing, first of all, congratulations on the record net profit of over 80,000 crore. But having said that, market was concerned regarding two figures. One, NII, another one, NIM. Let's start with NIMs first. Do you think that 3% is your exit this year? Next year, will it be possible? And more importantly, is it a bottom kind of figure which we are having right now? Thank you for giving this opportunity to explain your numbers. I think our guidance on the NIM has been exit NIM of 3%, and I think we fulfilled that. And we are also giving guidance for FY27, NIM of 3% and above. The NI impact in the Q4 was essentially in terms of the 25 basis point rate cut which had happened in December is fully priced in the Q4. And what I see going forward is, one is the repo rate unlikely to be changed, which means that probably the deposit rates will continue to be there. And by the way, we've done very well on the liability management. If you see, despite our significant growth in the deposit level, we have reduced our cost of resources. Right. So on the NI front, essentially the EBLR has impacted, and the double impact is, one is 25 basis rate cut which is fully factored in December, and the EBLR book itself has grown. The homegrown and MSMEs are mandatory linked to the EBLR. But I believe that we will be focusing on the asset mix and also ensure that the 3% guidance on NIM will continue to be holding on. When you are saying 3% guidance on NIM, one more question which I'm mentioning is what we have seen this quarter is a kind of something which is bottoming out of NIMs, and the situation will be better than other quarters? Yeah, obviously, because there are no rate cuts are expected, which means that EBLR book will hold on at this level. And the new loans, particularly on the corporate side, we are looking at how a lot of times what happens in the corporate relationships, while you make less on the interest, we also have significant other income. That has actually contributed to the overall return on asset being above 1%, the guidance what we had given. So I believe that both in terms of NI and NIM, going forward will be a better position in the current financial year. You mentioned about deposits now. That is something which you have grown around 11% this year. Keeping the scenario in mind, do you think it is going to be a challenge in coming quarters, and what sort of strategy you are applying for that? On the deposit side, I think we have done very well. See, on a large book of our size, 11.4%, and the retail term deposit going at almost 15% is phenomenal. On the savings bank side, if you have noticed, for the first time we have had a double-digit growth after a very long time. And again, this is the largest savings bank book in the country. So I believe that around 11 to 12% deposit growth, which we are aiming for in the current financial year, and with almost 3 lakh crore excess SLR what we have, we should not be having any challenge in funding the credit growth. Talking about the loan growth, which has been phenomenal this quarter, around 16 to 17%. Keeping this pace in mind, do you think there is going to be some deceleration in next year? Do you think that you may match even the current quarters or year's growth? The credit growth is a function of macros. I think how this West-Asian conflict is going to play out, whether it is going to be impacting in terms of consumption moderation. These are all some of the things what we need to look at. But I believe that the robust credit growth what we have witnessed so far in the month of April gives us an impression that we would probably go with the earlier guidance what we have given last year. This year also we continue to give the guidance of 13 to 15% on the credit growth side. Especially on the corporate growth, there has been growth of around 15%. Do you think this is going to continue, or you think there is going to be some impact of the global scenario which is continuing, some unfavorable conditions
recessions may also come in terms of weather. I mean, that is something which may happen. What is your assessment of the corporate growth? So about 13 to 15% credit growth, we are not building only purely on the corporate side. See, if you have seen in the last quarter and the full year on basis also, we have grown across the segments. Right. And I believe that that trend will continue. And as far as corporate is concerned, the credit growth is also a function of what is happening in the markets. Because market rates were higher, some of the migration has happened to the bank borrowings. So, on the capex side, we have not heard anyone withdrawing the capex, what they've committed earlier. And, based on our pipeline, what we have about 5 trillion rupees, we believe that 13 to 14% corporate credit growth is eminently feasible. You also mentioned that even the current scenario is looking good. What is your assessment of the ground situation currently? So there are see, the impact is widespread. It's not intense, which means that every business in some way or the other impacted. The cost of production may go up, and the cost of fuel is going up definitely. So at this juncture, we have not seen any stress in our book. It depends on how long it is going to go on. Right. All right. Thank you so much for talking to us and explaining the numbers in detail. नहीं हो गया है हमारा खाना पीना डिनर सारा कुछ सब कुछ हो गया है और इस तरह से लाइक करती थैंक यू बच्चा बहुत अच्छी बात है चलिए बहुत हमें अच्छा लगा कि आपको मेरे में आपकी माँ की छवि दिखी तो बहुत अच्छी बात है सब कोई बोलता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है आज का डेट में आप हमें माँ का दर्जा दिए हेलो और बताइए और सब बताइए खाना पीना हो गया नरेंद्र कुमार आप कहाँ से हैं मैं झारखंड से हूँ आप कहाँ से हैं चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा भाभी ने कहा अच्छा भाभी ने कहा क्या नमस्ते आशीर्वाद दीजिए प्रयागराज से हैं अच्छा खुश रहिए आबाद रहिए अपने जीवन में खूब तरक्की कीजिए आपके फैमिली मेम्बर सभी खुश रहे और हमारा भी हेल्प कर दीजिए हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर दीजिए और बताइए खाना पीना हो गया मुकेश कुमार डिनर में आप क्या खाया आज हम डिनर में आज क्या खाया आज हम मिक्स सब्जी बनाए थे आलू मूली गोभी और ये पटल और आलू सबको मिक्स करके बनाए थे तो बहुत ही अच्छा लगता है मिक्स सब्जी तो आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा झारखंड के लोग मछली चावल अच्छा हाँ मछली चावल भी बनता है पर हर रोज़ नहीं बनता है राम राम सभी को राम राम करण जी राम राम कैसे हैं आपका वेलकम हमारी लाइव में और बताइए लंच मतलब सॉरी मतलब खाना पीना हो गया आपका डिनर माँ तो माँ होती है अच्छा अच्छा बच्चा खुश रहिए और बताइए कैसे हैं आप आपका डिनर हो गया गगन कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं करण जी और आपका हाँ हमारा भी हो गया डिनर और बताइए आपके फैमिली मेम्बर भी सब कैसे हैं प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है लाइक करिए like you taught me to take care of my ताकि आप अपने लिए भी वही करो तो आई डोंट वांट द ओल्ड यू टू स्टे इन द पास्ट इसलिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ आपके लिए कैश किंग गोल्ड ताकि आप फिर से आप आई लव यू मॉम थैंक यू बच्चा
Do you like the hamper, Mom? It's such a pretty little hamper. Our Keshking has now become Keshking Gold, which is the goodness of Ayurveda and science mixed together. It has oils, it has serums, it has shampoos, and it's all for your hair. Agree. So now it's time for you have to take care of yourself. Yes, thank you so And much. I love you. I love you. वेलकम टू कैंडिडेट सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? बीवी से आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ अच्छा दिखाइए ना। एक मिनट सर, ये टेनिस ब्रेसलेट ट्राई कीजिए ना। वो टेनिस नहीं खेलती। इट्स फॉर एवरीबॉडी। I know. How charming. सर इसका नाम ही चार्म ब्रेसलेट है। आर्ग्यूमेंट हारने पर इसी का चार्म काम बचा सकता है। यही तो दिक्कत है, हार जीत गया। सर फिर तो सॉलिटेयर से कम में काम नहीं होगा।